we are trying to do a series of conversations on the economy, because our feeling is that the economy is now totally forgotten. Everybody is worried about their cult, kiska cult upar aayega, or everybody is worried about foreign policy, or everybody is worried about दुनिया में क्या हो रहा है. जो एक चीज हमारे वो डिबेट पे आती नहीं, हमारी पार्लर्स पे आती नहीं है, वो डिबेट है इकोनॉमी पे. We don't think of economy at all. We feel कि इकोनॉमी खुद ही चल जाएगी, खुद ही ठीक हो जाएगी, या बहुत से बहुत IMF से भीख मांग लेंगे या वर्ल्ड बैंक से मांग लेंगे. एक तो भीख हमारी जड़ों में बैठी हुई है, हम सारी जिंदगी भीख मांगते हैं और हम सारी जिंदगी यही कोशिश करते हैं कि भीख से बात बन जाए. तो हमने सोचा है कि हम सारे पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो भी हमारे साथ बैठ जाएंगे, कुछ लोग हमारे साथ बैठना भी नहीं चाहते क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट जो हैं वो आपस में इकट्ठे नहीं बैठ सकते, वो आपस में इकट्ठे बात भी नहीं कर सकते. इस पर भी हमारे साहब से पूछेंगे. तो जो हमारे साथ बैठेगा उसके साथ हम बात करेंगे और हम पूछेंगे, भाई बताइए आपकी विजन क्या, आप चाहते क्या इकोनॉमिक्स में, और ये पॉलिटिशियंस को हम कैसे अपनी तरफ लेके आए कि वो इकोनॉमिक्स को एक कोई सब्जेक्ट समझे डिस्कशन का. Economics is not just corruption, and economics is not just public investment. There is more to economics than corruption, public investment. Yeah, the third variable they have is begging. Economics is more than begging. So with that, I'll turn to my guest, Ammar Khan Saab. Ammar Khan Saab, mashallah, is a young economist, a PhD, and mashallah done very well. Well known now, writes very well, and is known as the rogue economist on Twitter. तो पहले तो अमर साहब मुझे अपने आप का बताएं कि आप रोग इकोनॉमिस्ट क्यों बन गए. ये पहले हमें सवाल का जवाब दे, फिर आगे चलते हैं. This is like a long time back, about like 10 years, 12 years back, because my view has always been कि जी you've got to एक contra view होना जरूरी है. Like आप एक जो typical जो वो चल रहा है, जैसा आपने बोला based interest को या सेल्फ इंटरेस्ट को या उनको फॉलो करने के लिए, if you want to do something then sure, ठीक है. So you've got to be rogue, you've got to have a, जैसे कहते हैं ना, alternate view of things. alternate में definitely गलत भी हो सकते हैं, इंसान है, गलती का पुतला होता है, हम सब गलत होते हैं, बट इट्स इम्पोर्टेंट कि जो चीज है उसको आप चैलेंज करें बजाय इसके कि जो चीज आ रही है उसको ऑन द फेस ऑफ द आप एक्सेप्ट कर लें. I'm going to enjoy my conversation with you since you're willing to challenge us. तो जरा एक बात बताइए, पहले थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें, योर एजुकेशन एंड योर बैकग्राउंड एटसेट्रा, ताकि वहां से जरा शुरू करें. My backgrounds are primarily it's in finance. Economist पर एक साइड का वो है, ग्रेड स्कूल जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में करा था. उससे पहले my background has largely been in finance, private equity and risk management. तो ये इकोनॉमिक्स वाली चीज जो है, this is more of a side thing rather than जिसे कहते हैं ना primary job या something that pays the bills. Achha, good, great. And you got your education where? I got it from IESC, Spain, Barcelona. Oh my God, what a lovely place, yeah. What a lovely place, huh? Good for you, good for you. अच्छा, तो अमर साहब बताइए, give us your rogue view on the economy. क्या हमारी इकोनॉमी माशाल्लाह, क्या इसमें problems हैं? What are your key problems that you face? I think, sir, the key problems, it's a very import heavy, it's a very, जिसे कहते हैं ना, external flow driven economy. Again, there are too many things. एक ये नहीं कह सकते कि जी एक ही चीज आप पिक कर लें and that would be it. There are some productivity issues as well. There are high dependence on imports, that is a thing. और over the जो taxation structure है, उसके incentives ऐसे align हुए हैं कि जी it doesn't make sense to invest in anything which, जैसे कहते हैं ना, आपकी total factor productivity या overall value add increase हो. So there are multiple reasons. We can't really pinpoint one thing. Again, and as you said, कोई भी आप सेक्टर पे कर लें, it's a cabal. It's जैसे कहते हैं, it's more of an oligopolistic structure. किसी भी उसमें आप चले जाएं, किसी भी सेक्टर को देख लें, किसी भी मार्केट को देख लें, you have a few players who just who also write the policies, who are the regulatory and the जैसे कहते हैं ना, de facto regulator themselves. So that is the view here. Ammar sir, tell me, do we have an economic policy? No, sir. We definitely don't have an economic policy. We take a day-to-day view of things. आज क्या करना है? आज तेल की कीमत कितनी है? तो कल क्या करना है? आज गंदम की कीमत कितनी है? If you had to characterize our economic policy,
अगर आपने बिल्कुल कैरेक्टराइज have a करना policy. है हमारी इकोनॉमी, तो आप क्या कहेंगे, क्या हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है? Sir, we are, I mean, if you look at it, कितने कोई 230 मिलियन जो है हमारी पॉपुलेशन है, तो वी हैव अ लॉट ऑफ लेबर दैट नीड्स टू बी पुट टू, जिसे कहते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी. सो व्हाट डू वी डू? आई थिंक वी शुड जस्ट स्टार्ट विद agriculture first, because we have sufficient arable land, we have sufficient labor, and with the right set of incentives we can at least start feeding ourselves and stop importing food and eventually become a net exporter. So एक वो है ना, एक trajectory we've got to follow. You start with Now agriculture. you're a finance man. Now you're a finance man. You do private equity, you do investments. How do you do them? You do them because I came and told you today कि यार अमर साहब बड़ी अच्छी बात है, खुदा के वास्ते आप इस तरह करें, स्टॉक ले लें OGDC का या कुछ, यहाँ DHA में प्लॉट ले, इस तरह आप काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपने असेसमेंट करते हैं, अपने रिटर्न देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से काम करते हैं. कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? जो रिस्क रिटर्न होता है, जो मेरा जो रिस्क एपेटाइट होगी, उसके हिसाब से I am going to take a decision, and that will be done through जो मार्केट की जैसे कहते हैं सेंटिमेंट होगा. और if I let's say अगर मैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, so I'm going to take a view on Pakistan first, whether that kind of risk is acceptable to me or not. अगर रिस्क एक्सेप्टेबल है तो उसके लिए commensurate रिटर्न क्या हो? How will you take a view on Pakistan? How will you take a view on Pakistan? How will you assess risk? What will you do? I'm going to look at whether the real growth is coming or not, and what are the components of real growth. So that will be the first point of order, and then I'm going to see what is driving that growth, whether that growth is being driven by indigenous or whether that growth is being driven by, let's say, outside flows and dependent on some kind of flows from external parties. So these will be two critical components for me. So how will you find them out? Will you do research? Will you talk to people? Will you just sit in the morning and make up your mind? And research, talk to people, develop a framework. It will be a fairly tedious and long process that cannot be done overnight. Do you see that being done for policy? Definitely not. ठीक है, हमारे मिनिस्टर साहब जो आते हैं वो आते साथ अपना अनाउंस कर देते हैं और वो काम करना शुरू कर देते हैं और काम क्या करते हैं जो उनकी मर्जी होती है. सिविल सर्विस उनके पीछे. Is that a way to make policy? So tell me. Definitely not. From your finance experience, how would you make policy in Pakistan? Supposing you were the finance minister tomorrow, what would you do? Well, I hope not. But if yes, then I think it needs to be split into what needs to be done in the short term and what needs to be done in the long term. You need to do band-aids for the short term before आप long term वो कर लें. Long term में तो आप बोल रहे हैं कि जी मुझे ये काम करना है, मगर in the short term, if you're bleeding, you may not be alive till you reach the long term, and we're all dead in the long term anyway. So we start with fixing whatever the bleeding points are. Let's say in current context, phase out the subsidies, bring in जैसे कहते हैं जो भी है, plug the deficits, and then have a plan, a 3-year, 5-year, 10-year plan in place, and ensure necessary जैसे कहते हैं mechanisms कि उनको follow किया जा सके. Yes, वो अभी भी I'm sure exist करते हैं, but are they even being followed? Do we even monitor them? Yeah, is the जैसे कहते हैं ना are the controls or the governance framework such के ऊपर से कोई इसको monitor कर रहा है नहीं कर रहा? That is a different story. You can have the best governance mechanism, but if no one wants to follow it, doesn't matter if it exists or not. So मुझे बताएं, what would you do in the short term? The bleeding, how will you stop the bleeding? How are we going to stop the bleeding? I'm going to जैसे कहते हैं, how are we bleeding right now? So अगर आप उसमें देखें, so we are a net energy and a net food importer now. So these are my two critical bits. I'm going to figure out to eventually move towards as much indigenous and renewable possible. Yes, it's not fully possible to do 100%, but I can always जैसे कहते हैं, create an incentive structure, create policy through which I can जैसे कहते हैं indigenously we can move towards an energy. We can use charcoal, we can use more of renewables, and then again that cannot be done overnight. This is a 3-year, 5-year thing. ये चीज हो गई, and then see how right now what's happening is a significant quantum of fuel imports are just being burnt on the road. Do we need so many cars on the road? Are our cities
Why are our cities designed in a way that they are car friendly and not pedestrian and mass transit friendly? So again, that is a more structural change that needs to be done, which cannot be done overnight, which cannot be done in 3 months. But yes, in 3 years that can be done. So maybe lay foundations for that, because in 3 years' time, if you continue as is, car ki import or fuel ki import is only going to increase, it's not going to go down. But if you create an incentive structure for a mass transit or multiple mass transits and feeder routes, eventually it's going to plateau out. So this can be a 3-year plan. So again, the short-term fixes will eventually lead to some kind of a 3-year or a 5-year fix as well. But मुझे एक बात बताएं, आपने जो कहा कि short term में you look at the two imports and you'll try and reduce them. Do you mean import controls? No, definitely not import controls. You're not in favor of import controls? I'm not in favor of import controls. Okay, great. What about the exchange rate? Would you let it slide? Manage. Slide, it totally depends what we call slide. Again, it's a very thin market for PKR. I would, if I am there, again, I hope I'm never there, but if I am there, there needs to be managed in a certain range where you're not way too undervalued and not overvalued either. Jaise classic REER mechanism hota hai, real effective exchange rate. So this, you need to figure out a certain range. All countries in the world work in a certain range. I don't think there is any truly free float currency. So yeah, we work in a certain range. हमने तो PID में लिखा है, learning from the Chinese and other countries. हमने तो लिखा है इस पे कि जी exchange rate policy can be managed, we don't mind, but it should be undervalued most of the time. We have maintained the policy of overvaluation most of the time. हम हमेशा overvalued रखते हैं. Real effective exchange rate is not a great measure. It's a measure with a number of errors. So undervalued exchange rate रखें ताकि हमारी cost of import ज़्यादा रहे और हमारी export ज़रा well priced हो. China ने यही किया है कितने सालों से. That's a good idea. But अब आ जाए onto the long term reform agenda. आपने दो बातें बड़ी अच्छी की कि चलें जी agriculture में oil की supply बढ़ाएं और so edible oil पे import dependence कम करें, गाड़ियों के पे dependence कम करें. But फिर आपके पास एक और problem है. You have your domestic car industry, a 60-year-old infant जो माशाल्लाह लाडला है, माँ का लाडला है, उसको तो हम छेड़ नहीं सकते. तो उसको क्या करेंगे आप? उसे क्या करें? I think उसमें you need to nudge them to start exporting. Whether they can export or not, that is a different issue. But for how long are we going to support that? And अगर वही वाली बात है, if you transition towards mass transit, if you create an environment where having a car simply doesn't make any economic sense, उनकी demand destruction से they will be forced to either compete in a global market or just close down ops. अभी तो हम तो PIDE में ये कहते हैं कि mass transport अब पाकिस्तान में बन ही नहीं सकती. ठीक है, mass transit जो है वो DHA से तो नहीं आ सकती इधर. सबर्ब में तो mass transit कहीं भी नहीं होती. बिल्कुल नहीं होती. तो सिर्फ शहरों में होती है, ठीक है ना. बिल्कुल. सबर्ब से अगर आप गाड़ी DHA से अगर बस जाएगी तो it will run at a loss because DHA में इतनी दूर लोग रहते हैं कि वहाँ वो बस स्टॉप ही पे कोई नहीं आएगा, ठीक है ना. सो क्वाइट फ्रैंकली mass transit जो है, जो लोग समझते नहीं हैं, हम PIDE में कहते रहते हैं, mass transit really depends on the way you organize your city. mass transit हो सकती है लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में, जहाँ के लोग फ्लैट्स में रहते हैं, जहाँ के लोग माशाल्लाह पैदल भी चल सकते हैं, क्योंकि mass transit बाय डेफिनेशन पैदल चलनी होती है, ठीक है ना. mass transit अभी आमिर दुरानी ने भी लिखा है, नो डेंसिटी नो ट्रांजिट. तो mass transit तो मेरा ख्याल माजी की बात है. बहरिया टाउन में क्या mass transit होगा? अंदर ही होगा, बहरिया टाउन के बाहर तो नहीं हो सकता. तो एक तो बहुत बड़ा मसला है. दूसरा मुझे बताइए कि आपके जो इंडस्ट्री है, how do you see, you are a private equity player, how do you see our industry? Is it competitive? Is it capable of exporting? क्या आपका ख्याल? I think with the exception of a few entities, I won't even call industries, with the exception of a few entities in those industries, we are not competitive. If you take out various trade exemptions, various concessional agreements that we have, we may not be competitive in pretty much anything. So yeah, that's a pretty grim view. I'm sure a lot of people would disagree with me, but I think such is the case here. And this can be seen in our overall industrial growth, can be seen in overall export growth as well. But if you think about it, if we keep giving them protection, जैसे कि अभी हमने गाड़ियों की protection में अब जो लकी मोटर्स ने भी लगा लिया है,
मंशा ने भी लगा लिया है, सबने एक वो फैक्ट्री लगा ली है टू असेंबल कार्स फॉर द लोकल मार्केट, नोबडी इज असेंबलिंग। हमने पाइड में लिखा है कि ऑन जो है बहुत एक चीज है जो कि माशाल्लाह 300-400 बिलियन की ब्लैक इकोनॉमी है ऑन। तो ऑन को एलिमिनेट करने के लिए हम अगर इन लोगों को कहें कि जितना बड़ा ऑन है उसके हिसाब से या प्रोडक्शन बढ़ाएं या एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और इनके टारगेट्स फिक्स करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं या वो बढ़ाएं, नहीं तो ऑन के पैसे वापस करें हुकूमत को। विल दैट बी वर्केबल और नॉट? देखिए दिस कैन नॉट वर्क, ठीक है। अगेन वो प्रोडक्शन बढ़ाना, इट्स नॉट प्रोडक्शन इज अंडर स्विच, के आपने एक स्विच दबाया प्रोडक्शन बढ़ गई। ऑन इज जैसे कहते हैं ना, इट्स मोर ऑफ अ सिम्टम रादर देन द डिजीज। ऑन इज अ सिम्टम के यू नो, अब हो ये रहा है कि ऑटोमोबाइल्स आर एसेंशियली एन एसेट क्लास नाउ। मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास लेट्स से कि आपका उस दिन जैसे मुझे कॉल, मेरी आपकी बात हो रही थी, आपने कहा भी आप एक्स रुपीज इन मैं क्या करूँ इनका, ठीक है। आप अब ये कर सकते हैं कि अब आप एक गाड़ी बुक करा सकते हैं, उस गाड़ी को आप 6 महीने बाद बेचते हैं, और जो डॉलर जिस हिसाब से पीकेआर डिप्रिशिएट होगा उससे ज्यादा परसेंटेज से उस गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाएगी। सो एसेंशियली वो एक डॉलर की प्रॉक्सी हो गई। या बाजार में जाके अगर आप चाहें कि $50,000 में खरीद लूं, वो मुश्किल होगा आपके लिए लेना, मगर आप जाएं तो अभी गाड़ी खरीदें और $50,000 की प्रॉक्सी आपको मिल जाएगी। सो इट्स एसेंशियली सैडली instead of being in mode of transportation, it's also now an asset class, and this is how bad the economy is structured again. बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी आपने बात की, बट नाउ द पॉइंट इज के ये एक और चीज लोग शोर मचाते हैं, हमारे साथ बड़ी मजेदार चीज कहते हैं, लोग कहते हैं हम सेव नहीं करते, हम बड़े अनसेविंग ओवर कंजम्पशन पीपल है। वुड यू एग्री विद दैट? I fully disagree with this. इनफैक्ट मैंने एक पेपर लिखा था, इसमें एक आर्टिकल लिखा था आज से कोई महीना डेढ़ पहले। हम जो सेविंग करते हैं वो एसेंशियली करते हैं या तो कैश में करते हैं, या हम सोने में करते हैं, या हम रियल एस्टेट में करते हैं। ये तीनों चीजें जो हैं ये नेशनल अकाउंट में नहीं आती। हम जो सेविंग रेट निकालते हैं, कोई साहब जाएंगे वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां से सेविंग रेट निकाल लेंगे, वहां से आ जाएगा 12-13% आ जाएगा, दैट इज नेशनल अकाउंट। ये जो तीनों चीजें मैंने बताई, दे आर नॉट अकाउंटेड फॉर इन नेशनल अकाउंट। तो वी डू सेव, बट वी डू नॉट सेव इन द फॉर्मल इकोनॉमी, जिसके थ्रू वो पैसा प्रोडक्टिव इकोनॉमी में री इंजेक्ट हो जाए या उसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट हो। अमर साहब ये मुझे बताएं, you are a finance guy, you are a trader, you tell me how will you get me, the saver of Pakistan, to come out and invest in Pakistan? Is that possible? या रेमिटेंस जो भेज रहे हैं, मुझे आज पूछा गया रेमिटेंस वाले इन्वेस्ट क्यों नहीं करते, मैंने यही पूछा, मैंने कहा वो रेमिटेंस वाला बेचारा बाहर बैठा हुआ, मैं भी एक जमाने में रेमिटेंस वाला था, IMF में काम करता था, मैंने जब यहाँ पैसे भेजे, मैं क्या करता उस पैसे के साथ? लॉटरी ले सकता था और क्या कर सकता, बताइए, कुछ और हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि अगेन स्ट्रक्चर्ड, जैसे आमिर साहब ने भी बोला, बिल्डिंग मॉस्क इज आल्सो स्पिरिचुअल एसेट क्लास। आई थिंक तो वो यही चक्कर है कि इट्स जस्ट इजियर बिकॉज कैपिटल मार्केट्स या दूसरे एवेन्यूज में देयर इज सो लिटिल कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल फॉर व्हाट हैज हैपेंड ओवर द इयर्स, कि लोग ये कहते हैं कि जमीन ले लेंगे, जमीन सामने तो है, इट्स समथिंग टैंजिबल। इवन टैंजिबल भी नहीं है, जस्ट द होप कि ये जमीन मिल जाएगी। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपन। आई थिंक रियल एस्टेट में वन थिंग दैट वी डोंट कंसिडर इज द सर्वाइवरशिप बायस। कहते हैं कि जी एक जमाने में हमने प्लॉट ले लिया, उसकी वैल्यू आज कोई 100 गुना हो गई, बहुत अच्छी बात है, बट वी डोंट रियली काउंट दोस्त जिन्होंने उस जमाने में पता नहीं कहाँ पे प्लॉट लिया और वो 10 साल बाद या 5 साल बाद एग्जांपल देता हूं, मैंने 2 प्लॉट लिए थे 2000 में, ठीक है, नहीं सॉरी 1980 में या 79 सब लगा, आई डोंट नो, मेरी बीवी को उसके फैमिली ने एक प्लॉट लेके दिया, वो खा गए पाकव्यू वाले अलीम खान साहब, और वो हमें 20 साल कोर्ट में लगे, फिर कोर्ट ने हमें आधी कीमत दी, तो वो तो लॉस हो गया। उसके बाद देखें, यहाँ एक मुर्गा सिटी था जहाँ मैंने पैसे डाले थे, प्लॉट लिया था, तो खा गए साहब, और वो फिर रहे हैं, he is probably going to get a PMLN ticket, but he's safe, so there's no problem. So the question that I have for you is, another question that I have, that we are working on in PIDE, हमने एक पेपर किया, फॉर एग्जांपल यू माइट हैव सीन इट, जो हमने किया है कि महबूब कह रहा था 22 फैमिलीज हैं पाकिस्तान में, हमने एस्टिमेट किया स्टॉक मार्केट इज ओन्ड बाय 31 फैमिलीज, एंड वी हैव सीन दैट द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इज अ वेरी स्मॉल क्लब, माशाल्लाह सारे भाई बहन दोस्त हैं, सिंध क्लब बैठते हैं, कोई सिटी बैंकर्स हैं और कोई NIT के बंदे हैं, कोई सिविल सर्वेंट्स हैं, दे ऑल नो ईच अदर, दे आर ऑल क्लोज फ्रेंड्स, दे ऑल सिट इन सिंध क्लब, पंजाब क्लब टुगेदर, वो हमारे सारे बोर्ड्स वो कंट्रोल करते हैं। तो ये जब इतनी क्रोनिज्म हो, डू वी हैव अ स्टॉक मार्केट इन पाकिस्तान सिंस यू प्ले अराउंड इन दैट?
No, sir, we don't. We have a fairly illiquid, shallow and narrow market. It's very easy. It's a rigged market. I'll be very blunt here. Once again, no need to mince words. It's a very rigged market. I would say आप तो 50 लोग बोला. I would say there are mainly like 30 players, institutional and high net worth को मिला के 30 to 40 participants होंगे, and they just play. And the kind of insider information which is freely available in the market, the market has little to no integrity. So yeah, again, that is also an issue. As an investor, you tell me, it's 75th year of our birth. We've had the stock market for almost 75 years. The things that you said, I wrote about that in 1992. I and Shahid Kardar, maybe before you were born. मुझे बताइए कि ये मार्केट को हम इतने सालों में ठीक नहीं कर सकते, क्या वजह, क्यों नहीं ठीक कर सकते? I think we will just circle back to जो आपने शुरू में बात करी कि cliques और वो cabals बने हुए हैं, and this is it, the same people, same 20-30 people. There is no competition in the market. आप अभी देखें, even if you just look at the market participants, brokers देख लें, you will not find a single new broker. They're all legacy brokers या उनके offshoots हैं. You will not find anyone who is bringing technology to the market, who is bringing any kind of price discovery. In fact, मैं ये हमेशा कहता हूँ पिछले 10 साल से what happened globally ये हुआ है कि financial institutions का जो जोर होता है फाइनेंसिंग के ऊपर, कैपिटल प्रोवाइडिंग के ऊपर बैंक्स का, वो खत्म हो गया है, एंड कैपिटल मार्केट्स हैव टेकन ओवर. You have multiple new products in the market globally. We have not introduced a single new product in the last 12 years post 2008. So again, there's a laundry list of people whom we can assign blame to, and whom we can say, they just did not work enough or made the right decisions कि हम यहाँ पर हैं. Because एक वो होता है ना, आप 1 साल 2 साल का There's a laundry list of people. Where is the laundry list? I don't see the laundry list. I don't have it either, but I'm just saying, I think, that was a very generic comment. The Prime Minister has full control. The Finance Minister has full control. The State Bank Governor has full control. Why is there a laundry list of people? ये लोग बड़े पावरफुल लोग हैं. ये जो कहते हैं हो जाता है. अगर इनको शौक हो BRT बनाने का, ये बना लेते हैं. अगर इनको शौक हो बहुत बड़ा महल बनाने का, ये बना लेते हैं. अगर इनको शौक हो कुछ करने का, तो हो जाता है. तो why is there a laundry list of people? Why don't you put the blame squarely where it is? I think we can put the blame squarely where it is, but then that needs to be cascading bhi hota hai na. So I cannot blame the, let's say, head of the government for a policy issue at a regulator. Okay, that just is cascaded down a couple of levels. So again, there is no point in just saying कि यार ये किसका वो है. But the macro picture here is our capital markets have failed to develop or evolve with times over the last 10 years. We were close to our peers in early 2000s till late 2000s, but उसके बाद से there has been little to no growth in the number of investors, in the activity in the market and everywhere. And this is because of that, the capital has gradually moved towards other illiquid assets like real estate. एक और मैं आपको एग्जांपल दूं, आई एम श्योर आपने इस पे काम किया होगा, नहीं किया तो समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग कि आप करेंगे, कि पाकिस्तान हैज ऑफिशियली नेवर इंपोर्टेड गोल्ड इन द कंट्री. अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो पिछले 20 साल में, मैं 2000 से डेटा देख रहा था, तो उसमें से 1 या 2 साल से उसमें जो $20 मिलियन का गोल्ड आया होगा. बट इट्स वेरी इजी टू बाय गोल्ड. ठीक है, गोल्ड कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, मतलब तो a lot of cash is being parked in gold. A lot of cash is being parked in local currency, foreign currency. So that is your saving, but that is being parked elsewhere and not being reinjected into the economy. Why? Because the alternate available, जिसकी हमने बात कर ली, क्या हाल है उसका? Yet we have a gold futures being sold in the commodities market in Karachi. Those gold futures are not really gold futures in the local market. They are just pegged to the international market. इसमें आप गलती से कभी इन्वेस्ट कर देंगे तो नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, because the spread that they charge is much higher than what is in the international market. So the moment you are in, whether the price moves or not, you are actually in a loss. So मैं तो हमेशा एडवाइस अगेंस्ट ही करता हूँ कि इसमें ना ही जाए तो बेहतर है. ये जो कमोडिटीज मार्केट कराची में बैठी हुई है पिछले 25 साल से, जो IFC ने बनवाई थी, क्योंकि ये भी हम जरा डोनर्स को भी बीच में ले आए ना, IFC ने कमोडिटीज मार्केट बनवाई थी
25 साल से वो अभी तक क्या कर रही है? इट्स अ सरकारी दफ्तर विद बिग बिल्डिंग, माशाल्लाह बड़े बंदे वहां बैठे, तो उसने किया क्या अभी तक? आई थिंक उन्होंने कोशिश करी है कि जी जो हमारी लोकल कमोडिटी है उसके फ्यूचर बनाए कुछ करें, बट फ्रैंकली आई डोंट थिंक दे हैव एनी सक्सेसफुल प्रोडक्ट. ज्यादा उनका सबसे ज्यादा सक्सेसफुल प्रोडक्ट मेरे ख्याल से रेड चिलीज है, एंड दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट. मगर उसमें भी औना पौना वॉल्यूम होता है. सो अगेन इट्स, अगर आप उसका 10 ईयर वो देखें यार, 10 साल 20 साल में उसकी ने कोई वैल्यू ऐड करी है, तो आई विल से दैट वुड बी क्लोज टू जीरो. तो फिर बताइए व्हाट वर्क्स इन पाकिस्तान? प्लॉट्स, गाड़ियां. तो दैट्स वेयर यू कैन इन्वेस्ट. तो फिर ये शोर क्यों मचाते हैं हम लोग कि हाँ क्यों इन्वेस्ट करते हैं, क्या करें हम? So there, you know, this is what the topic of today is, right? Forgotten economy. So what needs to be remembered has been forgotten, और फिर उसके बाद जो remnants बच गए हैं, तो उसमें यही कर. That's it. तो मुझे बताइए आपकी प्राइवेट इक्विटी कैसे चलती है? हाउ डू यू हैव? नहीं हो सकती. It's difficult. It's very difficult because of the many reasons. क्योंकि public equity इतना difficult है. Private equity का risk जो है public equity से ज्यादा होता है. तो पब्लिक इक्विटी में ही काम करना इतना डिफिकल्ट होता है, तो प्राइवेट में तो काम करना भूल जाते हैं. देयर इज अ रीजन व्हाई यू विल नॉट सी अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन दिस एरिया, जबकि बाकी दूसरे हमारे पीयर ममालिक जिनको हम पहले कहते थे अब हैं या नहीं है, वो एक अलग बात है, उसमें काफी एक्टिविटी होती है, मगर लोकली देयर इज बारली एनी एक्टिविटी. अच्छा ये बताइए, नाउ लेट्स कम टू दिस कि हमने डिसाइड कर लिया कमोडिटी मार्केट नहीं चल रही, स्टॉक मार्केट नहीं चल रही. यू आर इन द प्राइवेट इक्विटी मार्केट. प्राइवेट इक्विटी तो बेसिकली दे आर द वल्चर्स of the economy, no? You guys try and snatch up dying assets and revive them. So, is there a market for that? Do you have a good market? No. Or do you see any good markets in Pakistan? Apart from plots, any good markets in Pakistan? I don't think right now. If you ask me, क्या will I put my money? If you ask me individually, क्या मैं पैसे किधर डालूंगा? All I'm going to do is I'm just going to buy the 10-year PIB. ठीक है, हुकूमत पाकिस्तान को मैं पैसे दे दूंगा, बिकॉज दैट इज इवेंचुअली इज द लार्जेस्ट बोरोअर एंड एवरीवन एल्स. इनफैक्ट अगर आप पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड रिटर्न्स देखें फॉर्मल एसेट क्लासेस में, इक्विटीज में, फिक्स इनकम में, सो इन्वेस्टिंग इन गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैज बीन द बेस्ट ट्रेड रादर देन इन ब्रॉड बेस्ड इक्विटी. हाँ ठीक है, अगर आप एक्सेप्शनल कोई एक वो हो गया तो हो गया, बट ऑन एन एसेट क्लास बेसिस फिक्स्ड इनकम is the best right now, because बाकी सब तो structure ही इतना out है कि it just doesn't make sense. No, but Ammar, I'll beat you right now. I'll give you an asset that will do better than the PIB. Dollars. Agreed. ठीक है ना? I'll get you. Quite frankly, on a rational basis, what is better than buying dollars and putting them in a locker? Agreed. Better than that is to buy a car on leverage. क्योंकि you get exposure to dollars with leverage. आप बैंक से कार लोन ले लें, 50 लाख की गाड़ी लेनी है, आप 10 लाख का कार लोन ले लें, और बाकी 40 लाख बैंक आपको शौक से दे रहा है, आपका रिटर्न ऑफ इक्विटी आप खुद निकाल लें कि IRR कितना होगा, क्योंकि डॉलर से लिंक है उसकी प्राइस. आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है? What would you do? How would you make this economy grow then? If you were the finance minister, imagine you are the finance minister. चल, अब क्या करेंगे? I think वो ये हम शुरू में बात कर चुके हैं. Again, you need to encourage more investment in, let's say, export oriented industry. Industrialization तो करनी है, मगर वो किसी को 2 अरब की सब्स्टिट्यूशन, किसी की 3 अरब की सब्स्टिट्यूशन, that doesn't work. You need scalable export and you need to discourage tax based क्या कहते हैं इसको, discourage real estate. ठीक है, there can be 2 things. They can be through regulations or they can be through higher tax rates. Something's got to give here. ठीक तो बताइए कैसे? Give me your plan. What would you do? I agree, this is the goal. You fix the goal. Now tell me, what would you do to achieve this goal? So increase tax rates on real estate. उसकी जो valuation है, make it on market. Increase tax rate. Let's say, I don't know, 30%. Second home tax rate, 50% on capital gains. And let's see where we go from there. First so order of business. You do that. You'll push everything to the dollar. आप आज tax rate करते हैं increase, मैं अपनी property बेच के dollar ले लूँगा, I'm better off. And then we see how to take care of the dollar. Again, there are no easy ways out of this. नहीं तो तभी, that's why I'm asking you the tough question. बताइए. हाँ. That's why we're discussing this. So, and that's where you try to move that allocation towards more industrial activity.
ठीक है, आप डेट की तरफ लेकर जाएं, आप यू मेक द डेट मार्केट इजियर, यू मेक द इक्विटी मार्केट इजियर, ठीक है, आप उसमें बोलें कि जी आप यू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एक्स एंड वाई एंड यू रिड्यूस टैक्स रेट्स ऑन दैट. अगेन आई थिंक टैक्स स्ट्रक्चर भी इन सब चीजें, व्हाट्स होल्डिंग एवरीथिंग टुगेदर इज द टैक्स स्ट्रक्चर. टैक्स स्ट्रक्चर अभी ये है कि जी लो रिस्क एक्टिविटीज जो हैं उस पे हमने, हाई रिस्क एक्टिविटीज पे कोई टैक्स नहीं है, लो रिस्क पे जो है ज्यादा टैक्स. तो दिस नीड्स टू बी लॉपसाइडेड. ठीक है, अभी बिल्कुल ही हमारा उल्टा सीधा टैक्स स्ट्रक्चर है. सो आई थिंक फिक्सिंग दैट और जैसे कहते हैं उसको ट्वीक करने से वी कैन डू समथिंग. अच्छा रोग साहब, हम आपसे बिल्कुल पीआईडी में हम आपसे बिल्कुल डिफरेंट स्टांस ले रहे हैं. हम कह रहे हैं टैक्स को डी एम्फसाइज करें, आप चलें इन्वेस्टमेंट की तरफ, टैक्स को छोड़ें, डॉक्यूमेंटेशन को छोड़ें, लोगों को इन्वेस्ट करने दें, बाद में टैक्स डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा. और हम टैक्स इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं? हम टैक्स इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं? बताइए, टैक्स किस लिए इकट्ठा कर रहे हैं? पब्लिक सर्विस के लिए. कौन सी पब्लिक सर्विस मिलती है आपको? में नहीं मिलती ना, चाहे अगर टैक्स इकट्ठा होगा तो शायद और मिल जाएगी. नहीं तो हम तो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे इसके लिए, और उनके बिल्कुल घरों पब्लिक के लिए, सेक्टर पे पेंशन के लिए, उनकी यशी के लिए. हमें क्या मिलता है पब्लिक सेक्टर से? एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसा ही. आधा टैक्स तो इस्लामाबाद ले जाता है जहां मैं बैठा हूँ. बिल्कुल ऐसा ही. इस्लामाबाद क्या वैल्यू ऐड करता है इकोनॉमी को? कराची तो करता है, लाहौर करता है, इस्लामाबाद क्या ऐड करता है? बिल्कुल सही है. ठीक है ना. सो व्हाई मुझे बताइए ना, लेट्स कम टू एपिस्टेमोलॉजी. हमारे इकोनॉमिस्ट जो सोचते हैं वो सारे सोचते हैं कि जी टैक्स फर्स्ट, और वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि वर्ल्ड बैंक कहता है. वर्ल्ड बैंक ने आज तक हमारे लिए, आप बताइए, वर्ल्ड बैंक का सक्सेसफुल प्रोजेक्ट आपको भी पता है? पता नहीं सर, आई थिंक रिपोर्ट ज्यादा होती है, काम हमको इतना पता नहीं है. तो रिपोर्ट्स आपने पढ़ी है, कैसी होती है? हाँ वो देखिए. कैसी लगी आपको? सही है, काम मेहनत काफी करते हैं या करवाते हैं. मेहनत काफी करते हैं, पर आपकी प्राइवेट इक्विटी में काम आते हैं? देखें उसमें जो है ना, मेरे हिसाब से 100 पेज की रिपोर्ट के बजाय अगर 3 पेज की समरी हो तो वो ज्यादा बेहतर होती है. गुड दिस पॉइंट. इज वन लर्निंग. ये प्रैक्टिकल लर्निंग जो है ना इसमें ये है. सुबह मैं आई वाज एक्चुअली रीडिंग थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स का, मैं किसी को कुछ को पढ़ा रहा था, तो बहुत डेटा है, मगर वो अगेन यू नो इट टू मच स्टफ, नॉट मच वैल्यू दैट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट, या उसमें हो सकती है. पर हम सारी पॉलिसी तो वर्ल्ड बैंक से बनवाते हैं, ठीक है ना. So what you say to that? And our economists, we don't have independent economists, we have no independent thinkers. तो हम क्या करें? सर पेट भी तो पाल रहे हैं ना. हाँ जी. something's got to pay the bills as well, right? आप ये कहते हैं कि इंडिपेंडेंट हो, तो इंडिपेंडेंट तो मतलब जब तक सैलरी नहीं आएगी, जो सैलरी देगा आप उसका एक हद तक इंडिपेंडेंट हो सकते हो. You can only have independence when you are not dependent on money hitting your account at the end of the month. ठीक है. So again, that's a very micro but practical view of things. अच्छा, एक और चीज लोग कहते हैं बहुत ज्यादा, जो वर्ल्ड बैंक भी कहता है, IMF भी कहता है, but they never spell it out. This is structural reform, but they never tell you what structural reform is. What in your mind is structural reform? Structural reforms, I think what their view is, IMF, World Bank, they're very market oriented, very market focused, and sometimes going full market creates more unintended consequences than anything else. We've got a very cookie cutter model. ठीक है, that I will fully agree. So you know, structural reforms उनके हिसाब से होंगी, जी सारी चीजें market based होनी चाहिए. Yes, market based होनी चाहिए, but for how long? For at what stage, that is a different question altogether. So I think not every prescription is the right one, but not all prescriptions are misleading or wrong. So what are your prescriptions for structural reform? Prescription reform, it needs to be done by the sovereign on a case-to-case basis. This cannot be. What are the broad themes? Broadly, let's say how do I want my GDP growth? How do I want to grow? ठीक है, मेरे GDP growth के क्या components होने चाहिए? I would say कि यार, you know what, I need export oriented growth. ठीक है, this is a policy is in place. हम पहले तो बात कर रहे थे कि ये policy नहीं है कोई. ठीक है, हम बैठे, बोला 4 लोग बैठने, बोला कि यार policy needs to be कि there needs to be export oriented growth. ठीक है, अब that export oriented growth may require certain incentives which are not market based. So
For the multilateral, that would be like, gee, this is a structural reform you need to do कि उसको market based करो. But if I am getting that right output, again, जो हमने export growth का करा, and if I'm giving an incentive, those incentives need to be, जैसे कहते हैं ना, aligned with certain output goals. That concession, that incentive should not be in perpetuity. जैसे आपने बोला 60 साल की infant industry. It should not be a 60 साल की infant industry. If you get an incentive for 2 years, 3 years, if that doesn't work out, the incentive closes, you die. ठीक है? We need to let industries die as well. We should not try to keep everyone just जिसे कहते हैं ना, zombies alive till forever. So this is it. अगर multilateral लोगों ये बोलेगा, you know what, you cannot give any incentives and you will let the market decide. But sometimes the market, you know, what is the, जिसे कहते हैं, एक sovereign के लिए, एक sovereign की population के लिए, what's better for them may not be what's in the best interest for the market. So ये जो divergence है, that needs to be sorted, and this is where policy making comes into play. This is the fine balance that needs to be struck rather than just following a full pro market model या going full let's say pro control. But ये बताइए, जो sovereign है, जो आप कह रहे हैं, I mean, most people who argue that the sovereign knows better and this market doesn't know better. I will speak for the market. I think the market knows best. The sovereign doesn't know best. And if anything, there are kinds of sovereigns. There are sovereigns that are kind of enlightened. There are despotic sovereigns. There are वो जिसको कहते हैं extractive जो कहता है वो Massimo Robinson, फिर वो कहते हैं Mancur Olson कहता है. There are वो rogue sovereigns. तो अब हम sovereign को समझ सकते हैं कि हमारा sovereign हमारा best interest जानता है, क्या वो चाहता है हमारा best interest, क्या the sovereign is a good adjudicator of our interest or not. इसको हम देखें या सिर्फ market को हम ban करें. I think this brings us back to our earlier conversation कि policy है या नहीं है. Policy needs to be driven from the top. That means it needs to be driven from the sovereign. हम लोग नीचे से बैठ के bottom up policy drive नहीं कर सकते. ठीक है, हम लोग बातें कर लें, बेताशा बातें कर सकते हैं, but we cannot drive policy from the bottom. Policy will eventually come from the sovereign, but then whether the sovereign has the wisdom or not to figure that it does not know everything. It is not omnipotent. It is not the entity with complete knowledge. This is where I would say maturity comes, and this is where we say, you know, where the market can do well, where sovereign should come, and where sovereign should not intervene. Again, do you think that the public does the public sector has good capacity to make policy? Does the public sector has experts in finance? Does the public sector experts in energy? Does the public sector have enough expertise to make good policy? Yes, there are some great people in public sector, but largely no. I don't think that kind of capacity exists, but a lot of that capacity exists in the private sector. And you know, how you tap that private sector, how you leverage the private sector, that should be the key. But I will not say that the sovereign may have any capacity. There is tremendous capacity. We have a lot of people who do great things, but then there are a lot of others who don't do anything. Okay, folks, whoever wants to talk, raise your hands. Otherwise, I'll keep going. अच्छा, ये बताइए कि ये तो हो गया sovereign का. अब markets जो मैं देखता हूँ, जो हमने PIDE में estimate किया है, गवर्नमेंट को अगर मार्केट व्यू पॉइंट से देखें, गवर्नमेंट कंट्रोल 80% ऑफ द मार्केट. गवर्नमेंट फॉर एग्जांपल हैज द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ डेड एसेट्स. सब प्रिंसिपल डेड एसेट बीइंग रियल एस्टेट, जो गवर्नमेंट रखी बैठी है अपने अफसरों के घरों के लिए. ठीक है, जो गवर्नमेंट माशाल्लाह जजों के बड़े बड़े घर बनाए हुए हैं, जर्नलों के वगैरह वगैरह, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. फिर गवर्नमेंट के पास ये एंटिटीज हैं लाइक रेलवे वगैरह, वो भी डेड एसेट्स पड़े हैं. The government owns a lot of dead assets which it cannot do anything with because of the zombies in there. The zombies are the public sector workers. जो कहते हैं हमें गारंटी चाहिए, हमें आप कुछ ना तंग ना करो, चाहे रेलवे डूब जाए हमारी तनख्वाह पूरी आएगी, चाहे PIA डूब जाए हम पूरे लेंगे पैसे और अपने बच्चे भी शामिल करेंगे. तो इसमें क्या आप करेंगे? What would you do as a finance minister? As a finance minister, देखें बात सारी है वो फिर वही वाले, I hope not, but इसमें ये है कि again the agreement, और जैसे कहते हैं ना implicit agency agreement that exists between the sovereign and its
hundreds or I would say thousands of entities needs to be rewritten. Someone needs to do it. You give out golden handshake, you voluntary separation schemes. वही वाली बात है कि the वो cost कहते हैं हम of लेते ही doing नहीं, that thing उनको right क्या now. जरूरत है वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम्स लेने के मेरे भाई? वो तो बैठे हुए हैं, वो कहते हैं हम जाते ही नहीं, जज उनको सपोर्ट करते हैं, जज कहते हैं इनको तनख्वाह दो। तो आपने तो उनका गॉड गिवन राइट है पब्लिक सेक्टर में कि आपने उनको पैसे देने, नो मैटर व्हाट। मुल्क डूब जाएगा पर उनको पैसे देने। तो somebody has to either have the, as they say in Punjabi, gatus, the ability to say no, जैसे इमरान खान साहब ने absolutely no कहा है ना अमेरिका को, कोई यहाँ absolutely no कह सकता है? नहीं देखिए, पता नहीं सर, मेरे ख्याल से तो कहना कह सकता है। अगेन हमको अनोखे तो नहीं है, दुनिया जहां में दुनिया भर में ये सारी चीजें हुई हैं। सो वी नॉट वी जस्ट थिंक कि जी बड़ी एक बात कहते हैं कि जी वी आर अनगवर्नेबल। ऐसा कोई अनगवर्नेबल नहीं है, दुनिया के मुल्क गवर्न हुए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स इदारे चल रहे हैं, तो अनगवर्नेबल कोई नहीं, एवरीवन कैन बी गवर्न विद द राइट सेट ऑफ इंसेंटिव्स। देखें वही वाली बात है, why will anyone not take it if the right incentives are there? Yes, they may be more expensive to the state in the short term, but if the right incentives are there, they will take it. आप किसी को 10 times 20 times 30 times जो भी उसकी सैलरी का देंगे, of course they will take it, and that money will eventually be reinvested in the economy. या आप स्ट्रक्चर करके देते हैं कि तुम ऐसा करो, ये पैसे तुम्हें दे रहे हैं, तुम इस प्लॉट में डालो, प्लॉट में क्या डाल दो, इसमें इंडस्ट्री में डाल दो या रेलवे में डाल दो, you'll get शेयर होल्डिंग फॉर इट, you get a perpetual dividend. Again, there are multiple ways of structuring this. Good point. बात सर ये, whether you want to do it or not, that is the first point of call, whether you want to take this decision or not. Once you take this decision, there are many ways to structure this. आप ये कह रहे हैं ना कि let's say कोई उसमें काम करता है, आप बोल दें कि ठीक है यार, ये जो भी है कैश है, ये तुम्हें इतना मिल जाएगा, इतना परसेंट कैश मिलेगा, इतने तुम्हें जो है इसके एसेट मिल जाएंगे या शेयर मिल जाएंगे, so it's not really a full cash based work. So I think if the right incentives are there, people would do it. Good point. जी आमिर दुरानी साहब, आप कर रहे हैं चैट पे, why don't you come and tell us? Sir, assalamu alaikum. I'm thoroughly amused. I've never met Ammar, but I just say outright, and it's not coming rosa lag raha or I'm gay, but the thing is that he's just magnificent. I think the boy has it all together, and Ali was, but you know, I think I like the ending, and I want to ask this question again. So two things, right? The first is, I agree with you, and you saw what I just wrote. It's, you know, ungovernable is Ishrat Husain's coin to stay afloat with inaction, and I think Nadeem Saab is to blame for it, because in front of Ishrat Saab, Nadeem Saab is all gooey. तो उन्होंने नदीम साहब जैसे तमीज करो तो कोई ओके ठीक है. No, really, I mean it's these exact same people like Dr. Nadeemul Haque, who, as much as we praise them and we water them and they become these big oaks and we like to sit in their shades, but actually they've destroyed Pakistan. So I think that, you know, and I think Dr. Nadeem at least has written about it a couple of years back, and you know, it was a great article. But Ammar, two questions. So the first one is, realistically, I mean, when you talk about real estate, I really like it. I mean, how do we kill real estate? And second, what's this infatuation with taxation, where in a country where the public allocation mechanism is the most ineffective, is the lowest end of the totem pole, is most ineffective and inefficient? So why are you running around for more taxes? I think, Ammar, when I say about taxes, it's more about reallocation of how tax rates are determined rather than increasing tax revenues. It's about creating that incentive structure. Let's say if I create an entity, right? I'm a private player. I say कि मैं कोई काम करता हूँ, मैं एक SME है मेरी, मैं आइसक्रीम बेचता हूँ, ठीक है, आइसक्रीम बेचता हूँ, I don't do nothing, मैं सिर्फ आइसक्रीम बेचता हूँ, मैं उसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराऊंगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराऊंगा तो मुझे ठग करके 29% टैक्स लग जाएगा. So as a private business, I'm taking the risk कि आइसक्रीम भी मुझे बनानी है, उसके लिए महंगी बिजली भी मैं इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि वो फ्रोजन रहे, और फिर अगर वो बिजली चली गई तो लॉस भी मेरा होगा, कोई स्ट्राइक हो गई तो लॉस मेरा होगा, किसी वजह से छुट्टी हो गई तो लॉस मेरा होगा. Regardless of anything, the state comes at end of the day, मुझसे बोलते हैं यार आप 29% जो आपका प्रॉफिट का बना है मुझे दे दो. So why should I bother when instead of making ice cream, I can just go and buy a plot near the airport and hope it all works out?
So this is what I'm saying. When I talk about tax, it's not about tax revenue, but how we incentivize people to invest in business or manufacturing or any kind of business rather than just real estate. I know many people. But I don't understand, Ammar, I don't understand. जो चीज चल रही है उसको मारना है कुछ और चलाने को, मारना नहीं है। देखें, अगर रियल एस्टेट चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, इसमें आप क्या मतलब, एक रियल एस्टेट चल रहा है ना, मैंने लेट्स से के 10 लाख रुपए चल रही है, एसेट क्लास चल रही है, आप मेरे लिए क्यों मार रहे हैं एसेट क्लास? वो फिर वही है ना, फिर ये आपकी फॉरगॉटन इकोनॉमी में ये चीज आ गई। नहीं, फॉरगॉटन इकोनॉमी नहीं है, मेरी एसेट क्लास चल रही है। ठीक है, एसेट क्लास चल रही है। Why can't you make the stock market amenable to my investing in it? अमेरिका में स्टॉक मार्केट इज अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द रियल एस्टेट। ठीक है, तो अगर हमारी स्टॉक मार्केट नहीं चल रही, इसमें किसका कसूर है? इसमें कसूर जो है हुकूमत का। अच्छा, फिर जो पब्लिक सेक्टर वर्कर जो गारंटी लेके बैठे हुए हैं, तभी हर बंदा कहता है, हर बच्चा कहता है मैं पढ़ता नहीं हूं, मैं पब्लिक सेक्टर में चला जाऊंगा। ये भी एक एसेट क्लास है, ये भी एक एसेट क्लास है ना, पब्लिक सेक्टर वर्क। इसको भी खत्म करें। ठीक है, इनको क्यों प्रोटेक्शन मिली हुई है और बाकी लोग क्यों मारे खा रहे हैं बेचारे? वो दिहाड़ीदार जो है वो रो रहा है, उसको आप इनफॉर्मल कहते हैं, पब्लिक सेक्टर वर्कर को आप सलाम करते हैं। अच्छा, पब्लिक सेक्टर के वर्कर की जो पर्क्स हैं वो तो टैक्स ही नहीं होती, जो उसके घर है, जो उसकी गाड़ियां हैं, जो उसके प्रोटोकॉल है, वो तो टैक्स ही नहीं होते। ये बताइए। नहीं, वो तो देखें, राइट नाउ मैं अभी जो बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये अभी आप जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नेशनल अकाउंट्स के। आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल इकोनॉमी राइट नाउ, कि अगर जीडीपी ग्रोथ है, मुझे दिखानी है वो किसी तरह, ठीक है, कि जी मैं चाहता हूं कि मैं 7% पे ग्रो करूं, क्या वो कैपिटल मैं रियल एस्टेट में डिप्लॉय करके ग्रो कर सकता हूं 7% पे? मैं नहीं कर सकता। तो वो कैपिटल मुझे किस तरह मैं उसको रीडायरेक्ट करूं? Either real estate is also showing up in your national accounts. Only no, construction is showing. Real estate transaction, real estate transaction, plot valuation is not showing up. Plot valuation is not showing. But yes. Construction is showing up, right? Construction is showing up. So rather than tax real estate, my suggestion is we allow construction to happen. अभी जो हमने चेक किया है PID में, हमारी स्लाइड सीरीज में आप देखें, आपने कुछ बनाना है, आपको साल 2 साल तो लग जाते हैं परमिशन लेने में। अगर आप बंद कर दें, अगर फॉर एग्जांपल मैं जानता हूं कई लोगों को, गरीब लोग जिन्होंने 2-2 मरले जमीन ली थी लॉन्ग टाइम अगो, ठीक है, वहाँ मॉडल टाउन के पास, बेदिया में या व्हाटएवर, नाउ दैट जमीन हैज बिकम वेरी वैल्यूएबल। वो वहाँ अभी तक बैठे, उनको बनाने दें, 2-3 स्टोरीज ऊपर नहीं बनाने देते। तो इंस्टेड ऑफ टैक्सिंग रियल एस्टेट, व्हाई नॉट यूज द रियल एस्टेट एक्टिविटी टू मूव फॉरवर्ड? Agreed. I fully agree with you there. बिल्कुल सही है, इसको वो करें as long as some activity is coming. Real estate as a stash of cash. एक होता है ना कैश, आप या तो आपने मैट्रेस के नीचे रख दिया, अब ये नई चीज ये है कि आपने जमीन लेके रख दी। That shouldn't exist. मुझे बताइए क्यों नहीं exist? देखिए, रीट आपने लॉ बनाई थी, मुझे याद है सलमान शेख ने बड़ी मेहनत की थी, मैं उससे लड़ता भी था, उसने बनाई थी 2010 में। आज हो गए 13 साल। You got only one real estate REIT in the country. Why not? Because अब बनने ही नहीं देते किसी चीज को। अगर आपने रेगुलेशन ऐसी बनाई, अब REIT जब बन गई थी लॉ, we should have had, maybe people like you should be doing REITs. Maybe I should be buying a REIT from you rather than plot. I should be buying a REIT from you. ठीक है ना? REIT as an asset class in America is doing very well. बड़ी अच्छी REITs है, ठीक है ना? So अगर हम asset classes बनाते ही नहीं, जो asset class चल जाती है उसको मारेंगे, तो फिर तो हम मार खाएंगे ना कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन इसको आप फॉर्मुलाइज करें, आप सबको रीट पे बनाएं। एनीवन वांट्स टू डू अ न्यू हाउसिंग सोसाइटी, इट शुड डू इट एज अ डेवलपमेंटल रीट। एब्सोल्युटली अग्री। आप 100 बिस्मिल लो, आप रियल एस्टेट एक्सपोजर लें, एसेट क्लास बनाएं, बट डू इट एज अ डेवलपमेंटल रीट। सेम स्ट्रक्चर, सेम एवरीथिंग, तो इन्वेस्टर इंटरेस्ट इज सेफगार्डेड। नहीं सर, वो बनाने कौन नहीं देता? वो बनाने तो ब्यूरोक्रेट नहीं देता ना। हम लोग तो कर लें, ब्यूरोक्रेट परमिशन नहीं देगा आपको। 6 साल लग जाएंगे। बाय द टाइम यू गेट दैट परमिशन, ऑल योर फाइनेंशियल्स आर आउट ऑफ वैक। You can't float it, you can't do anything. तो क्या करेंगे यार? After all, time is also an element in decision making. Can you are fund. आज मैं आपको 10 साल परमिशन में लगा दूं, तो आपके फंड की क्या वैल्यू हो जाएगी? ठीक है, सही बात है। This is a present value is a thing. बिल्कुल ऐसा ही है। Everything comes back to the public sector worker who's holding the country hostage. Would you agree or not? I disagree. I will disagree and on the premise that we cannot generalize. कि जी ये जो है इसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा। आई थिंक वो जैसे होता है ना कि
बोगीमैन वाली बात होती है आजकल, जैसे अमेरिका को हमने बोगीमैन बनाया हुआ है, तो इसी तरह पॉलिसी फ्रेमवर्क के लिए इजी वे आउट इसका बोलते हैं कि जी पब्लिक सेक्टर में बेकार आदमी है तो उसको तो काम ही नहीं आता. आई थिंक दैट इज द रॉन्ग अप्रोच. As I said earlier, there's some great people, there are some who don't, but how to steer them in the direction that needs to be done from the top. ये मैं और आप बॉटम से नहीं कर सकते. हर डिस्ट्रीब्यूशन जो सी उसमें अच्छे लोग बुरे लोग, अच्छी चीजें बुरी चीजें होती है. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे लोग चलते हैं. जो हमारा बात है कि रियल एस्टेट जो हर चीज में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना पब्लिक सेक्टर वर्कर की, वो जाती है टुवर्ड्स रिजिड कंट्रोल एंड एक्सेसिव कंट्रोल्स, एंड दैट्स व्हाई योर मार्केट्स आर नॉट फंक्शनिंग, दैट्स व्हाई योर एसेट क्लासेस आर totally out of sync. And the reason you buy real estate, मैंने real estate की भी calculation की, rates of return are not as enormous as you think they are. Rates of return are quite normal when you think about it, that average average development of a society takes 20 to 25 years. Society can't develop हो जाए. Survivorship bias अगर इसमें आप डालें, losses डालें, तो I would say it's adjusted returns would actually be lower than government bond. बिल्कुल, much lower. तो the issue is, इसमें कसूर किसका है? सर्वाइवरशिप बायस भी जो है वो तो पब्लिक सेक्टर वर्कर डालता है ना, क्योंकि अगर परमिशन ना मिले, अगर ये सब चक्कर हो, अगर आपकी रेगुलेशन सारी टेढ़ी हैं, उल्टी हैं, किसी ने उन पर सोच ही नहीं लगाई, तो फिर आप मार्केट क्या बनाएंगे? बिकॉज़ रिमेंबर मार्केट इज अ सेट ऑफ रूल्स. बोलिए अली खजर साहब, वुड यू लाइक टू से समथिंग? हैं अभी तक चले गए थे अली. अली खजर प्रीमा डॉन है, वो कहाँ बैठेगा ऐसी जगह पे? He is really a prima donna. चलें जी अमर साहब, thank you very much. This has been a great conversation, very informative. Really liked it, really enjoyed it. Do tell me anybody else who I should tap, and we will certainly get people to speak. I think we need to have a lot more conversation between economists. And your last thought I'll leave you with: why don't economists talk to each other? Tell me. I think they do. I think the fact that you have to call yourself an economist to be taken seriously, वो थोड़ा एक स्टकअप वो होता है. Again, anyone can be economist. You don't have to have a grad degree to be it. नहीं देखें, I just feel ये भी एक बड़ा वो चीज है कि जी मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने किया हुआ. I just feel everyone should talk about the economy because it affects them. हर किसी को affect वो चीज कर रही है. Everyone should be heard. The fact that we create these Chinese walls या एक बैरियर बना देते हैं कि जी सिर्फ ये लोग इन्होंने इतना पढ़ा हुआ है, यही बात कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. आई थिंक दैट इज फ्लॉड. जो बंदा अपने घर का बजट मैनेज कर रहा है वो भी अपने घर का इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, वो मार्केट स्ट्रक्चर के फलाने दिमागे की बात नहीं कर रहा, बट we need to listen to his view as well, and if it does not align with our views or whatever school of thought, we need to, let's say, talk to him, reconcile our differences rather than their differences. Thank you, rather than just saying कि जी इनको तो कुछ पता ही नहीं है, वो कर ले. So I think the problem here is there are small schools, ठीक है, क्लिक्स बने हुए कि जी आपस में लोग बात करते रहते हैं. मोर ओवर क्या कहता हूँ, अजीब सा लफ्ज़ है, जस्ट से सर्कल जर्क है कि आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं, and that is the end of it. I think we should just talk to more. We should talk to everyone. Everyone needs to talk to everyone to get what they feel, and if there are differences, reconcile them rather than saying कि जी या तो प्रो मार्केट हो सकता है या बिल्कुल ही आप जो है नॉर्थ कोरिया स्टाइल. Conversation is always open. That's why हम ये पॉडकास्ट ये करते हैं, वेबिनार्स, सेमिनार्स, ताकि सबको बुलाएं. बट हमारे लोगों में इन जनरल इकोनॉमी में इंटरेस्ट नहीं है, ये तो मानने वाली बात है. हम कराते हैं ट्विटर स्पेसेस, आज रात को भी ये करा रहे हैं. People are not interested in talking real issues. People are very cultist. But that's beside the point. मेरा सवाल ये था कि जो प्रोफेशनल्स होती हैं ना, there are professionals in the world, जैसे मेडिसिन है, कार्डियोलॉजी है, वगैरह वगैरह, even urban planners है, even ये जो अपने क्या कहते हैं, उन्होंने भी आर्किटेक्ट्स ने यहाँ बनाई हुई है. तो there is a conversation amongst them. Obviously, they listen to architects, also listen to the customers when they make something, but they have a certain expertise that nobody has, so they talk to each other. And what I'm concerned about is very simple कि यहाँ economists जो experts थोड़े बहुत बैठे हुए हैं तो कम, but even उनमें आपस में कोई इतना dialogue नहीं होता, and they are really not giving fresh ideas. So that's something that I think about the epistemology of policy. It's a wholly different subject. Epistemology of policy, KG, the economist sitting there, she will not, and Ammar, I'm using she now, so don't get worked up. ठीक है, Ammar Durrani कह रहा था ना, his ना करो. So नहीं जायज बात है. I agree with that. तभी ना she कहती है. So the point is कि why is there not informed conversation आपस में
और fresh ideas. मैं देखता हूँ बहुत कम fresh. People keep talking about the fiscal and the BOP. Very few talk about structural issues. तो इस पे I wanted your last comment before we go. I think people do. Once again, इसमें जरूरी ये है कि everyone needs to come with an open mind. People एक ego वाला issue आता है कि जी मैं ही सही हूँ, बाकी सब गलत हैं. Once we move beyond that mindset ना, कि जी मैं तो बिल्कुल गलत हो सकता हूँ. कोई मुझसे कहता है आपने गलत बोला है, मैं कहा यार बिल्कुल गलत हो सकता हूँ. मैं कोई मतलब कुछ जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ थोड़ी बैठा हुआ, मुझे सब सही होगा. ठीक है, मैं कहा बिल्कुल ठीक है यार, मैं गलत होऊंगा. So everyone can be wrong. Once we get over that barrier कि you can be wrong, accepting that you can be wrong, फिर तो I think everyone can have a dialogue. But I think this is a very basic precondition. Having the acceptance कि आप गलत हो सकते हैं, and being able to update your decision framework on the basis of new information. मतलब वो है ना, there is nothing set in stone here. तो I think ये चीज है, being able to update information, this is more important than just saying कि जी ये लिखा हुआ है तो ऐसा ही होगा, मैंने तो यही पढ़ा है, इसके अलावा तो और कुछ हो ही नहीं सकता. That is where we are flawed. बिल्कुल सही कहा. हमारी नेशनल साइकी में ये है. अब मैं देखता हूँ ट्विटर स्पेसेस में कि लोग बटे हुए हैं, हजार बंदा बैठा हुआ है, एक ही बात करी जा रहा है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करी जा रहा है, बट दे डोंट रियली वांट टू हैव अ डिबेट एंड डिस्कशन. सो दैट्स बिकम अ नेशनल साइकी सैडली, एंड कंट्रीज लाइक दैट seldom grow fast. So thank you very much, Ammar. This has been Thank you, Ji. Thank you. Inshallah we'll do it again. Thank you. Thank you, Ji. बहुत शुक्रिया. Thank you, everyone. Thank you. Bye.